नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पिछले दिनों आईबॉक लीडर्स का एक डेलीगेशन हमारे एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी से मुलाकात किया और उन्होंने बैंकों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई। इस मदद करने के लिए गए थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम हो रहा है और वुमेन्स एम्प्लॉय के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है। इन सब बातों को लेकर चर्चा करने के लिए श्री राहुल गांधी से मुलाकात की। और उसके बाद श्री राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अब मास के बजाय लोगों को क्लास वर्क के लिए काम किया जा रहा है। और उन्होंने अपना ट्विटर पे अपना मैसेज किया और उसके बाद उसको वित्त मंत्री ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और फिर चर्चा होने लगी कि यूपीए में और एनडीए में क्या क्या हो, बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे मिसयूटिलाइज किया गया, एक दूसरे पर तू मैं का आरोप लगा। आईपॉक डेलीगेशन का मिलना कहां तक उचित था, कहां तक अनुचित था, ये तो एक चर्चा का विषय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस घटना से बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों का फायदा होना मुश्किल, बल्कि लोगों अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, राहुल गांधी ने जो शेयर किया था, उनका ये कहना था, ही सेड दैट ही हैड मेट विद ए डेलीगेशन फ्रॉम द ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स कन्फेडरेशन who expressed their distress at the state of public sector banks and their impact on the common people। इसका एक वीडियो क्लिप भी है जो मैं आपको शेयर करूंगा उनके मीटिंग का। प्रॉफिट ओवर पीपुल, फर्स्ट पॉइंट था कि प्रॉफिट ओवर पीपुल का ध्यान रख करके प्रॉफिट पर ध्यान दिया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बीइंग फोर्स्ड टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर पीपुल एंड आर thus unable to serve the public effectively। सेकेंड पॉइंट था स्टाफ शॉर्टेज। With the staff shortage and a toxic work environment, they are expected to reach unachievable targets without a level playing field। Third, gender inequality। Women employees are not given equal opportunity or advancement and are forced to bear the brunt of the dissatisfied public। He urged the Modi government to stop using PSB as an unlimited source of funds for their fraudulent friends। There's also more to public sector bank than a dividend check to the government at the end of the year। और फिर वित्त मंत्री ने इसका जवाब दिया। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन lashed out at Rahul Gandhi after the leader of opposition accused the government of misusing state-run banks and their wealth। Rahul Gandhi has a penchant for making baseless statement, and the fact is that high concentration of the corporate credit and indiscriminate lending during UPA tenure had resulted in significant deterioration in the health of public sector banks, she said in a series of the posts on X on December 11। Leader of the oppositions did not the people who met the LOP tell him that high concentration of corporate credit and indiscriminate lending during UPA tenure had resulted in significant deterioration of the health of public sector banks? Under PSBs were treated as ATMs for their cronies and the shady businessmen। It was actually during the UPA regime when bank employees were harassed and forced to give loans to cronies through phone banking by the then Congress-led UPA government functionaries। Didn't the people who met the LOP tell him that asset quality review was launched by our government in 2015, unearthing the phone banking practices of the UPA government? Modi government initiated the 4R strategy and other reforms in the banking sector। Didn't the people who met with the LOP tell him that in the last 10 years the public sector banks were supported through recapitalization of rupees 3.26 lakh crore? The public also has a shareholding in the public sector bank, and dividends are the source of income for such investor also, not just for the government of India। Didn't the people who met with the LOP tell him that during the UPA rule,
these PSBs paid dividends of rupees 56,534 crores. Citizen-centric governance and the inclusive development is the core principle of the Modi government. Didn't the people who met with the LOP tell him that 50 crore Jan Dhan accounts and more than 52 crore collateral-free loans under various flagship financial inclusion scheme, PM Mudra, Stand Up India, PM Savanidija, PM Vishwakarma have been sanctioned. और ऐसी बहुत सी बातें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जो उन्होंने अपने गवर्नमेंट के अचीवमेंट को गिनाया। अब बात यहां आती है कि क्या आईपाक टूथलेस है, वर्थलेस है, कि अपनी बातों को लेकर एलओपी से मिलना पड़ा और उसका रिजल्ट क्या होगा। अब यह सारा मामला हाईजैक हो गया पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, ना कि बैंकिंग इंटरेस्ट या बैंकर्स के इंटरेस्ट के लिए। कॉन्फेडरेशन ने बैंक पेंशनर्स के बारे में एक लाइन भी नहीं कहा, जैसा कि लगता है कि उनके बुक्स में बैंक पेंशनर के लिए कोई जगह ही नहीं है। केवल वुमेन स्टाफ एक्यूट शॉर्टेज की बात तो ठीक थी, लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेड और पब्लिक के अगेंस्ट काम करने का ये दुहाई देने वाले, इसके मतलब ये यूनियन इतने अक्षम हैं, इनकैपेबल हैं कि अपनी बातें अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, आईबीएस से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं डील कर पा रहे हैं। तभी अपना सारा एजेंडा एलओपी को सौंपने गए और नहीं लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक मैन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर ऐसा होता तो वे ये बातें अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कह के सॉल्व कराते। ये तो चर्चा का विषय है, हमारे से कुछ साथी हमारी बात से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एलओपी से मिलने के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है, खासकर से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। बैंक पेंशनर के बारे में तो कोई बात ही नहीं किया, तो बात उसके बारे में तो बात ही नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अब दोनों पार्टियां, अपोजिशन की और रूरल पार्टी, अपने अपने दावे और अपने अपने दम भरेंगे और उस दम के दावे में बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई फायदा होना मुश्किल ही लगता है, खासकर से वर्किंग एम्प्लॉय या आप कह सकते हैं रिटायरीज के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात से कुछ हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है अथवा नहीं? थैंक यू, नमस्ते। I've just met the All India Banking Officers Association. They've raised multiple points, basically telling me how the very nature of the public sector banking system is being changed. These are serious issues that we want to raise in Parliament, but I don't think the government wants Parliament to run. So they are distracting people. They're very disturbed with this Adani issue. My name is Balchandra, All India President of Bank Officer Confederation, All India. Our structure is, we are representing all nationalist banks as well as private sector banks. Okay. Our total membership is more than 4.5 lakhs across the country. We are a apolitical organization, but at the same time, we are facing some threats from the present so and so. Bataiye. Basically, sir, we are concentrating on the issues what banking industry face in the present banking parlance. From that time, we were concentrating on the welfare of the people. But now, sir, we have a threat. We feel that banking is concentrating in the metro and urban, and the entire concept of banking has been confined to the word profit. So, in a sense, it is almost targeting the entire banking system at a very small number of people who are very wealthy. Yes, sir. The basic principle of the public sector bank to make banking accessible to people, to the masses, that is being destroyed. Yes, yes. Where is this being driven from? So this is driven from the government side. Yeah, but where is the pressure on the government to do this coming from? I personally feel that there is a thrust for profit. Every financial year end, there will be a post from the central government that the MD of the public sector bank is giving a dividend check to the Honorable Finance Minister. Sir, a public sector bank is giving credit not directly to the public, but it is given to the NBFCs. There is an NBFC there
who is lending to the public for 15% rate. A public sector bank is giving loan to the NBFC at 8.5%. And NBFC is then onward lending it to the general public. So the public is going to the NBFC, accessing the credit at 15%. Sir. There is no proper access of credit. Sir. And why are you not allowed to do that? See, we are not allowed to do that because we are totally on profit only. We are focusing on the profit. Our human resource is cut down. Rather than processing 1 lakh loans for 1,000 people to get 10 crore advance, you can process a big ticket advance. बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर बन गया है सर जिसमें लेडीज का सिनेरियो ऊपर की जगह इट्स ऑल डिमिनिशिंग. Though I am an MBA, my friend is also a postgraduate. I joined in 2011. I'm not able to take the promotion. Why? ट्रांसफर पॉलिसी अगर हमारे बैंक में आती है तो हमें ये कहा जाता है लेडीज को 1000-2000 किलोमीटर दूर डाल दिया जाए. ह्यूज ट्रॉमा में पूरा लेडीज है. स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, फ्रेश स्टाफ रिक्रूटमेंट. इस वजह से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ में क्या है कि हम वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. बेसिकली वी आर सर्विस प्रोवाइडर. कस्टमर को वो सर्विस नहीं मिल रही है और अभी इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है. बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, अगर आपका कोई कंपैरिजन हो रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बेसिस पे होना चाहिए. एंड यू आर सेइंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ सर. यस सर. सर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का सर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट ये जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की आती हैं, that is all level playing field. Yes, they are yes. asking you for certain performance and then making you do certain other Yes, things. sir. I'll just sum Okay. up. Yes, sir. I'll just sum up with a signing of statement. Sir, all these 12 points what we have raised is directly or indirectly affecting the customer service, sir. Sir, we are handling public money. When we are forced to do unethical things, unfair trade practices, why we are not able to resist? What is happening to the whistleblower policy? What is happening to the vigilance? Because the transfer and the disciplinary proceedings are being weaponized.